Assalamu alaikum to all my learners. Today's topic is improper integrals. Since we have focused on indefinite integrals with continuous integrants and finite intervals of integration. As you can see on your screen, ये आपको लिमिट डिफाइन करती है कि इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है सही we have studied continuous functions are integrable and the functions that are not bounded on the interval of integrations are not integrable. So here हमारा जो main objective है इस section में is to extend the concept of definite integral to allow for infinite intervals of integration, right? So let's begin with the solution. As you can see on your screen, यहाँ पे तीन तरह के improper integrals दिए हुए हैं. Improper integrals with infinite intervals of integration. Okay, improper integrals with infinite discontinuous in the interval of integration, and improper integrals with infinite discontinuous and infinite intervals of integration. तो देखते हैं किस तरह सॉल्व होते हैं infinite intervals of integration. First example से start करते हैं. Definition से start करते हैं. वो क्या कहती है हमें the improper integral of f over the interval like this is defined to be like this. हम कोई भी हमारा जो लिमिट्स होंगी उसको हम किसी भी अल्फाबेट्स में उसको सपोज कर सकते हैं, राइट? और क्या है आगे क्या कह रहे हैं, इन केस वेयर द लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम कहेंगे कि वो कन्वर्ज कर रही है, एंड द लिमिट इज डिफाइंड टू बी द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, और लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम यही कहेंगे कि वो डाइवर्ज कर रही है, सही? अब फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं. पार्ट ए क्या है, हमने यहाँ पे हमारे पास ये एक फंक्शन गिवन है. फॉलोइंग द डेफिनेशन वी रिप्लेस द इनफिनिट अपॉन लिमिट बाय बी. एज यू कैन सी dx अपॉन एक्स क्यूब सेम रहा आपके पास. हमने इसको रिप्लेस कर दिया अपने इन्फिनिटी को किससे, बी से, और लिमिट अप्लाई कर दी. कुछ नहीं किया, आपको इसको सिंपली सॉल्व किया है जैसे हमारी सिंपल इंटीग्रेशन होती है, और उसके बाद हमने लिमिट्स अप्लाई कर दी हैं, सही है? और लिमिट्स अप्लाई करी हैं, उसके बाद हमारे पास उसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर आया है. सो इतना डिफ़िकल्ट या इतना ट्रिकी नहीं है. ऐसे क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमारे पास जो है हम ब्रेक कर रहे हैं अपने फंक्शन को. एक तरीके से ये भी बोल सकते हो आप कि हम सपोज कर रहे हैं अपनी इन्फिनिट लिमिट्स को, राइट? अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं. Here's a theorem क्या स्टेट कर रहा है, dx upon x power p which is equals 1 upon p minus 1 if p is greater than 1 or otherwise it diverges, right? तो इससे रिलेटेड ये एग्जांपल है आपकी स्क्रीन पर जो कि आपको फंक्शन के मैंने इसमें क्या किया है, हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया है बाय यूजिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. हमने सिंपली जो इनसाइड हमारे पास फंक्शन था इंटीग्रेशन का, उसको उस पर हमने अप्लाई किया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया. उसके बाद द रिमेनिंग प्रोसीजर सेम वही है जो लास्ट एग्जांपल में हमने देखा है कि हमने अपनी लिमिट को सपोज किया है जो कि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही थी, सही? और इसको इस पर हमने इंडियन हमारे पास आंसर कुछ किया है. अब ये जो है हमें ये फॉर्म दे रहा है इन्फिनिटी, अगर हम इस पर लिमिट्स अप्लाई करेंगे ना, ये हमें फॉर्म देगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की. तो हम यहाँ पर एल हॉपिटल रूल जैसे कि हमने पढ़ा है वो अप्लाई करेंगे. हम दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू बी. तो हमारा जो ये फंक्शन है कुछ ये हो जाएगा 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर बी. इसके बाद हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे जो कि 0 है, राइट? इसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं, वो क्या कहती है, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर द इंटरवल negative infinity to b is defined to be like this, and it is said to be converge if the limit exists, otherwise it is diverge. And the improper integral of over the interval like this is defined to be like this. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हमने लिमिट्स हैं जो कि दोनों पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हैं, हमने इनको ब्रेक कर लिया है.
Where C is any real number, the improper integral is said to converge if both the term converge, otherwise it diverges, right? Next is also the definition. If f is continuous on the interval, except for an infinite discontinuity at b, then the improper integral of f over the interval is defined like this. Okay. And the improper integral is said to converge and the limit is defined to the value of the interval. In the case where the limit does not exist, the improper integral is said to diverge and it does not assign the value. Right, as we can see in this question. Let's move towards the further definition, which is if f is continuous on the interval like this, except for an infinite discontinuity at a, then the improper integral of f over the interval is defined to be this like this. It's somehow similar to the last one. बस यहाँ डिफरेंस था वहाँ पे हमारी नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच हो रही थी हमारा जो नंबर है इंटरवल और यहाँ पॉजिटिव पे अप्रोच कर रही है. Right, the interval is said to converge and if the indicated limit exists and diverge if it does not. If f is continuous on the interval like this, except for an infinite discontinuity at a point C, किसी particular point पे हो सकती है, in a comma b, then the improper integral of f over the interval is defined as. हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, ब्रेक कर लिया. जिस पॉइंट पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा था उसको उसके रिस्पेक्ट से ब्रेक किया है. सही है. where the two integrals on the right side are themselves improper, the improper integral on the left side is said to converge if both terms on the right side converge and diverge if either term on the right side diverges. This one is the last definition, I guess, from this section. ओके, होपफुली आपको डेफिनेशंस और ये कुछ क्वेश्चंस जो एग्जांपल्स हैं समझ आई होंगी. सो थैंक यू सो मच.